Before starting the video, I would like to tell you something about ibpsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move toward our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. I'm here with the next set of English questions which are very important for your SBI PO examination. So let's begin. So today we will solve a passage. So we have to read the passage and then answer the question. So let's begin with our passage. There are 4 paragraphs in our passage. So first paragraph is, since at least the time of Frederick Taylor, the father of scientific management, control has been central to corporate organization. तो कम से कम इसमें लिखा है कि जो फ्रेडरिक टेलर हैं जिनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोलते हैं, कम से कम उनके टाइम से तो जो कंट्रोल है वो सेंट्रल रहा है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. It has been the main point for the corporate organization. Now control of cost, of prices, of investment and not least of people. तो सिर्फ लोगों का ही कंट्रोल नहीं, कॉस्ट का कंट्रोल, प्राइसेस का कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स इसमें इंक्लूडेड हैं. Now control, even a perception of it can be comforting. What is the meaning of perception? Perception is a noun and it means the ability to see, hear, become aware of something through the senses. जब हमें किसी चीज का अनुभव होता है, किसी चीज की अनुभूति होती है अपने सेंसेस के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन. तो कंट्रोल, अगर उसका हमें थोड़ा सा एक भनक भी मिल जाए कंट्रोल की तो बहुत कंफर्टिंग लगती है, हाँ हमें इस चीज पे कंट्रोल है. Moreover, it feels like what a manager should be doing, that is setting targets, monitoring adherence to the procedures, directing, shaping the future of the business. Moreover, इसमें और क्या चीज है जो एक काम मैनेजर कर सकता है, जैसे to set the target, to monitor the adherence to the procedures, that strict rules are applied and they are being complied with. तो ये सब चीजें देख सकते हैं. कंट्रोल फील्स असेंशियल स्पेशली इफ यू आर द बॉस. तो कंट्रोल जो है वो सबसे ज्यादा असेंशियल कब लगता है, जब अगर आप बॉस हो तो. एक्सेप्ट इट टर्न्स आउट दैट फार फ्रॉम बीइंग वाइटल, टॉप डाउन कंट्रोल कैरीज सीरियस कॉस्ट, मेनी ऑफ विच हैव बीन हाइडिंग इन प्लेन साइट. अब दूसरी बात ये आ रही है कि इंपॉर्टेंट तो है कंट्रोल, लेकिन जो टॉप डाउन कंट्रोल है उसके बहुत ज्यादा हमें सीरियस कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं जो हमें साफ साफ नजर में नहीं दिखाई देते, छुपे हुए रहते हैं. वॉट इज मोर, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव है. And not a pie in the sky fantasy conjured up on a whiteboard, but a real working alternative. तो conjured मतलब क्या होता है, cause someone to think of something. तो ये नहीं कि हाँ आपने बस फैंटेसी बना ली, pie in the sky, हाँ ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ख्याली पुलाव जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ वो चीज नहीं है. एक रियल ऑल्टरनेटिव, एक वर्किंग ऑल्टरनेटिव है. It has been practiced to varying degrees in companies around the world for decades, and this alternative, it has been practiced to varying degrees, अलग अलग डिग्रीज में इसको प्रैक्टिस किया गया है अलग अलग कंपनीज में पूरे वर्ल्ड में. And in France in particular, it is taking care on the character of movement. फ्रांस में particularly किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है ये कि जो हमारा मूवमेंट है उसका कैरेक्टर क्या है. Now, companies as large as Michelin and Carrefour are questioning their control structures and seeing real results from replacing them. जो कंपनीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, मिशेलिन है या फिर केयरफोर है, तो वो अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे सवालिया निशान उठा रही हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए हम मतलब उनको रिप्लेस करना चाहते हैं, उनको रिप्लेस करके वो एक रियल रिजल्ट जो है उन्हें देखना चाहती हैं. This alternative has never had a name because fittingly, as you will see, it hasn't really had a guru. Now this alternative, it never had a name क्योंकि इसका कोई नेम नहीं रहा कभी भी. Because अगर हम इसको, as you will see it hasn't really had a guru. कोई गुरु है नहीं इस alternative का जिसके basis पे इसको नाम दिया जाए. Its principles have been passed from business leader to business leader like samizdat. What is the meaning of samizdat? Samizdat is clandestine copying and distribution of literature banned by state. यानी कि सीक्रेट. क्लैंडस्टीन मतलब होता है कीप सीक्रेट. अगर सीक्रेटली मतलब एक बिजनेस लीडर से दूसरे बिजनेस लीडर के पास चला गया, दूसरे से तीसरे के पास चला गया, तो एज इट इज वी डू नॉट नो कि वेयर इट हैज ओरिजिनेटेड, बट मोर रिसेंटली इट हैज स्टार्टेड टू कम इनटू द ओपन. बट अब क्या है, ये ओपन में आने लग गई है ये स्ट्रैटेजी. वी कॉल इट कॉर्पोरेट लिबरेशन और हमने इसका नाम अब दे दिया है, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट लिबरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज द आइडिया कैन बी स्टेटेड सिंपली इनफ. अब इस आइडिया को हम एकदम सिंपल तरीकों से जो है स्टेट कर सकते हैं. नाउ दिस इज अ
fill in the blanks. So we will fill it in the upcoming questions. So that doesn't mean that these firms are unmanaged. तो इसका मतलब ये नहीं है कि firms unmanaged हैं. No one is managing these firms. It is not like that. On the contrary, the specific actions that we observed in close to 100 liberated companies prove the opposite. बल्कि ये हम specific actions जो हम देख रहे हैं कि एक जो 100 liberated companies हैं उनके लिए जो हम action देख रहे हैं वो बिल्कुल opposite prove कर रही हैं. For example, every morning a liberated company's manager would ask whether there is anything preventing her team from doing their best. जैसे एक liberated कंपनी की मैनेजर है, वो हर सुबह अपने आप से एक ही सवाल पूछेगी कि क्या कहीं कोई ऐसी चीज है जो मेरी टीम को प्रिवेंट कर रही है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो. That may not sound unusual, but here's the first twist. So that is not unusual for a manager to think about that, but there is a twist. What twist? When her team shares a problem or an opportunity with her, she will not offer a solution. तो सबसे बढ़िया बात क्या होगी यहाँ पे कि जब उसकी टीम उससे कोई प्रॉब्लम शेयर करेगी या उसके साथ कोई अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेगी तो वो उसका सोल्यूशन ऑफर नहीं करेगी. Instead, she asks them to find their own after ensuring that there isn't something she is doing that would get in the way. Instead, वो उनसे बोलेगी कि आप खुद के हिसाब से इसका सोल्यूशन ढूंढो और ये एश्योर करके कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वो ऐसी कोई चीज तो नहीं कर रही जो उनके राह में आ रही है, उनके रोड़ा अटका रही है. फिर वो कहेगी उनसे कि तुम खुद से सोचो कि क्या हम इसको जो है इसका तरीका निकाल सकते हैं. So when a new project comes at, the manager does not devise a plan to complete it. What is the meaning of devise? Devise is to plan or to invent by careful thought. कोई चीज की प्लानिंग करना. तो जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो मैनेजर जो है वो प्लानिंग नहीं करेगा कि इसको कंप्लीट किया जाए. इंस्टेड शी आस्क्स द टीम टू डू सो. ओके, शी विल नॉट devise the plan herself or himself. He or she will ask the team to do the planning. In making these choices, she accomplishes two vital things. So in this procedure, she will accomplish two important things or vital things. She places herself in service of her team rather than above them as a supervisor. And this in turn has a direct impact on the behavior of her team. तो एक तो वो खुद को अपनी टीम के समान रखेगी, ये नहीं कि उनके ऊपर सुपरवाइजर की तरह बैठ जाएगी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी टीम के बिहेवियर पे एक अलग फर्क आएगा. इट स्टार्ट्स टू लिबरेट देम टू एक्ट ऑन देयर ओन इनिशिएटिव रादर देन पैसिवली अवेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम अबव. तो इससे उनको आजादी मिल जाएगी कि वो खुद का काम कर सकेंगे खुद के इनिशिएटिव से, बजाय कि बस पैसिवली बैठे ऊपर से ऑर्डर आया और उस पर काम कर दिया. खुद सोचेंगे वो, तो उनकी थिंकिंग भी बढ़ेगी. देन next paragraph is, at Decathlon, which is a sports equipment retailer with 80,000 employees, their form of corporate liberation is strongly supported by the CEO. तो Decathlon में क्या है, ये 80,000 employees हैं और वहां पे जो corporate liberation है वो उनके CEO के द्वारा supported है. Yet since corporate liberation is a philosophy and not a model, he gives latitude to the directions of each of the Decathlon's business units to co-create their unique फ्रीडम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट. तो अब ये कॉर्पोरेट लिबरेशन जो है, इट इज अ फिलॉसफी, इट इज नॉट अ मॉडल. तो वो अपने जो डायरेक्टर्स हैं, हर एक डेकाथलॉन की जो बिजनेस यूनिट है उसके हर एक डायरेक्टर को वो ऑर्डर देता है कि यू शुड को क्रिएट देयर यूनिक योर यूनिक फ्रीडम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, कि खुद का ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट आप फ्रीडम बेस्ड क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ देयर लार्जेस्ट वेयर हाउसेज आस्क्ड 150 एम्प्लॉइज टू डिटरमाइन द प्लेइंग फील्ड फॉर विच दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे एक जो उनका बड़ा सा वेयर हाउस है, जो कारखाना होता है, उसके डायरेक्टर ने बोला, उसके अपने 150 एम्प्लॉइज से बोला कि तुम वो प्लेइंग फील्ड डिटरमाइन करो, ठीक है, जिसके लिए तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो. He then asked them to transform in teams the organizational practices they thought were preventing them from being responsible in that field. फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस है उसे थोड़ा सा मतलब देखो कि क्या चीज तुम्हें प्रिवेंट कर रही है कि तुम इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते हो. Managers transition to the role of coaches in service of their teams, giving away their formal authority. तो मैनेजर्स जो है वो कोचेस की तरह अपने रोल में आ गए, ठीक है, अपनी टीम के साथ सर्विस करने लग गए बजाय कि एक अथॉरिटी के. तो वही चीज जो हमारी मैनेजर ने की थी कि वो सुपरवाइजर की बजाय अपनी टीम के साथ काम करने लगी. सो एज अ रिजल्ट टुडे ऑल वेयर हाउस टीम्स मैनेज द ऑर्डर फुलफिलमेंट बाय देमसेल्व्स एंड मेनी टीम्स सेट देयर ओन वर्क स्केड्यूल्स. तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज जितने भी वेयर हाउसेज हैं वो खुद की टीम के साथ काम कर रहे हैं. ऑर्डर फुलफिलमेंट वो लोग खुद करते हैं और खुद का वर्क शेड्यूल वो लोग सेट करते हैं कि इस टाइम पे हमें ये काम करना है. So they are being self-dependent. Now, the results have been impressive and the results are also good. When Decathlon lost their workplace transformation, it had already been a leading private
privately held multinational with $9.11 billion in revenue in 2013. So already when it has launched its workplace transformation, it was a leading privately held multinational and its revenue was $9.11 billion. But by 2017, it had grown organically to $12.79 billion worldwide. तो 3 से भी ज़्यादा $3.5 billion का उन्हें फायदा हो गया. In 2017 and 18, Decathlon was ranked the #1 great place to work in France. और इसी की वजह से Decathlon जो है 2017 में भी और 18 में भी for 2 consecutive years it has been ranked the first day that is great place to work, #1 in great place to work in France. Then next and the last paragraph is, if any organizational practice or structural element is mistrusting their intelligence, limiting their growth or hampering their self-direction, and if yes, ask them to redesign it. तो अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस है या स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो हमारे इंटेलिजेंस को मिसट्रस्ट कर रहा है, हमारी ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, रोक रहा है, हमारे सेल्फ डायरेक्शन को हैम्पर कर रहा है, तो हमें उसे रीडिजाइन करना चाहिए. Be prepared to see the majority of control practices and structures both in the hierarchical and in the support functions gradually replaced. तो क्या होता है, हम मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, वो हायरार्किकल में भी हमें दिखती हैं. हायरार्किकल मतलब अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रैंक, जिसको हम पदानुक्रमिक बोलते हैं, वो होगा. So be prepared to see the majority of control practices and structures both in hierarchical and in the support function, जो gradually धीरे धीरे replace होंगी. बहुत सारी control practices हैं और जो structures हैं. The respect tide will stimulate teams' willingness to set their own work schedules or to make their own hires, and these demands affect organizational processes. तो जो रिस्पेक्ट टाइड होगी उससे क्या होगा, जो टीम की विलिंगनेस है कि हम खुद का वर्क शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर करें, खुद हम हायर करें हमसे नीचे वाले लोगों को, तो उससे क्या है, जो इन डिमांड्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है वो इफेक्ट होगा और जो टीम्स हैं वो हमेशा तैयार रहेंगी काम करने के लिए. दे विल ऑलवेज बी रेडी फॉर डूइंग दी वर्क और एनी प्रोजेक्ट. Hence, teams assume more responsibilities and make more decisions on their own. Fewer remain for all the levels of managers. तो क्या होता है, इसीलिए जो टीम्स खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेती हैं, खुद के डिसीजन अपने आप से ले रही हैं, तो जो मैनेजर्स हैं उनके लिए ज्यादा काम बचता नहीं है. एंड मैनेजर्स व्हेन एक्सेप्ट दिस विल बी बिजी सर्विंग देयर टीम्स व्हाइल एब्स्टेनिंग फ्रॉम यूजिंग देयर फॉर्मल अथॉरिटी. और जो मैनेजर्स ये या जब मैनेजर्स ये एक्सेप्ट कर लेंगे जो अपनी टीम्स को सर्व कर रहे हैं, तो वो ये भी नहीं, एब्स्टेनिंग मीन्स रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, तो अपनी फॉर्मल अथॉरिटी जो है उससे वो एब्स्टेन हो ही जाएंगे. So they when accept this will be busy serving their teams while abstaining from using their formal authority. अपनी formal authority को वो use नहीं करेंगे जब उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी, वो अपनी teams के साथ काम करना चालू कर देंगे. Your employees will be willing to come to work every day to do their best. Your manager leaders will spend their days revealing employee potential, and you will enjoy dinner every night with your family knowing that your business is succeeding. तो आपके एम्प्लॉयज रोज जो है एक नई एनर्जी के साथ रोज काम पे आएंगे. आपके जो मैनेजर लीडर्स हैं वो अपने दिन बताएंगे कि एम्प्लॉय का पोटेंशियल किस तरह से रिवील किया जाए, और आप हर रात को अपनी जो फैमिली है उसके साथ आराम से डिनर एंजॉय कर सकते हो, ये सोचते हुए कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सीड कर रहा है. ठीक है, सो दिस वाज द पैसेज. Now let's solve 10 questions based on this passage. The first question is, which of the following can be considered as the theme for the passage? तो passage का हम theme क्या रख सकते हैं? First, role of managers in the company, role of employees in a company, relationship between manager and employees in a company, giving freedom to the team to do work what they think matters most, and none of the above. So see, as the passage described that many teams succeeded by their own schedule, and this will be the good option for the managers to earn profit. So we can write that the option D will be the correct, and we are talking in whole passage about the corporate liberation. जो आपकी फ्रीडम है उसकी ही बात कर रहे हैं हम. तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, it will be the most appropriate title or most appropriate theme you can say for the passage. Now next is, what is the tone of the passage? So tone क्या है passage की? Is it jovial, angry, analytical, sad or tentative? What is the meaning of jovial? Jovial is cheerful and friendly. बहुत ज्यादा उल्लासपूर्ण जो होता है, बहुत ज्यादा jovial, बहुत ज्यादा cheerful है, तो ऐसी टोन है पैसेज की. नहीं, हम किसी खुशी के बारे में तो बात कर नहीं रहे. Then angry, बिल्कुल गुस्से वाली टोन भी नहीं है. Analytical means using analysis और logical reasoning. अगर हम कुछ चीज का विश्लेषण करें कि ये हमने स्टडी की तो वो हो सकता है. Sad बुरी भी नहीं है, मतलब कि दुखी हो जाए हम.
या टेंटेटिव. टेंटेटिव मीन्स विच इज नॉट सर्टेन और फिक्स्ड. तो जो चीज सर्टेन नहीं होती है, जैसे हम बोलते हैं ना द टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन इज इन जून, मिड जून. तो डेट फिक्स नहीं है लेकिन हाँ उस टाइम पे है. तो नॉट फिक्स्ड और नॉट सर्टेन विच इज अनसर्टेन. तो एनालिटिकल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन फॉर दिस पैसेज, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग दैट दिस कंपनी इज डूइंग दिस थिंग, दिस कंपनी इज डूइंग दिस थिंग, सो दे आर क्रिएटिंग मोर प्रॉफिट और दे आर क्रिएटिंग लेस प्रॉफिट. सो दैट इज द एनालिटिकल टोन. ओके. Now, as author presents his theme with few examples of different companies, so we can write that it is analytical. Now, next is which of the following replaces dash in the given passage. So, in the second paragraph, I have told you about this blank. Let me show you once again that blank. So, this is the blank. The idea can be stated simply in a dash. That doesn't mean that these firms are unmanaged. Now, let's see what the question says. A liberated company allows employees complete freedom and responsibility to take actions that they, not their managers, decide are best for their company's vision. तो एक liberated company अपने employees को पूरी freedom देती है, पूरी responsibility देती है कि action वो लें, ना कि उनके managers जो best है company के vision के लिए. Second, your employees won't believe your trust, won't believe you trust their intelligence if you are always the one with the best solution. तो आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कभी भी आपको उनकी इंटेलिजेंस से ट्रस्ट करते हुए नहीं देख सकेंगे अगर सिर्फ आप ही ऐसे इंसान होगे अकेले जो हमेशा बेस्ट सोल्यूशन के साथ आते रहोगे. Then the climate in which most manager leaders show through their actions that they respect and trust employees. तो क्लाइमेट जिसमें मोस्ट मैनेजर लीडर्स क्या शो करते हैं कि उनके एक्शंस जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो अपने रिस्पेक्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट करते हैं. Then it requires the manager leaders to remove the obstacles preventing teams from doing their best. तो ये क्या चाहिए इसमें हमें कि जो मैनेजर लीडर्स हैं वो ऑब्स्टेकल्स हटाएं जो उनकी टीम्स को बेस्ट करने से रोक रहे हैं. So see, when we see the sentence after the blank, we can get the idea that it is describing about the management and freedom of employees. तो ये किस बारे में बात कर रहा है? मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है कि it doesn't mean that the firms will remain unmanaged. तो obviously मैनेजिंग की या फ्रीडम की बात कर रहे हैं. So our first statement, that is a liberated company allows employees complete freedom and responsibility to take actions that they, not their managers, decide are best for their company's vision. So this will fit the sentence appropriately. Okay. Now, next question is, which of the following is closest meaning of the word perception mentioned in the passage? So I have already told you the meaning of perception. It is the ability to guess something through senses, or it is the ability to see, hear or become aware of something through the senses. So first is division, किसी चीज को divide करना. Rehabilitation. Rehabilitation is action of restoring someone to health or normal life through training and therapy. So that is not the meaning similar to that of perception. Then pressure, you all know the meaning of pressure. And sense, किसी चीज की भनक हो जाना, किसी चीज को guess करने की होना, sense होना. So that will be the closest meaning for the word perception. Okay. Then next is, which of the following is closest meaning of the word devise mentioned in the plan? So what is the meaning of devise? To plan something in a careful way. So design, frame, re-evaluate and ignore. So किसी चीज को design करना, किसी चीज को fame मतलब it is not frame, it is fame. किसी चीज की आपको शोहरत हासिल होती है, बहुत name fame आपका हासिल होता है, so that is fame. Re-evaluate मतलब किसी चीज को वापस से जो है go through करना, re-evaluate करना. Ignore का मतलब आप सबको पता है, you all know the meaning of ignore. So the word which has the closest meaning with the word devise is to design something, to plan something. अगर यहाँ पे planning होता, designing, कुछ भी ये चीज होती, वो हम इसके जैसा लगा देते. Then next is, which of the following is the closest meaning of the word abstaining? So I have already told you about the meaning of abstaining is stopping oneself from doing something. किसी खुद को ही आप किसी कोई चीज करने से रोक रहे हो, that is abstaining. So fight is लड़ना. Recover is to recover something, means to return to a normal state of health or mind or strength. Then refrain is to stop oneself from doing something. And enroll is recruit someone to perform a service. So the meaning of refrain is closest to the meaning of word abstaining. That is, stop oneself from doing something. ये चीज मैं नहीं कर सकता. So C option will be the correct one. Then next is, which of the following can replace when except mentioned in the passage and make it grammatically correct? So the sentence explain about the managers and their expectance of giving responsibilities to their team. So ये हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे था हमारा ये था, ये देखो.
Managers, when accept this, will be busy serving their teams while abstaining from using their formal authority. So in the options we have while accept, should accept, who accept, would accept. So अगर हम यहाँ पे while accept लिखेंगे तो managers while accepting आएगा. So managers while accepting this will be busy. या फिर managers should accept this, जरूरी नहीं उन्हें accept करने पे हम मजबूर करें ही, it is not necessary. So managers who accept this will be busy serving. तो managers जिनको ये समझ में आ गया, जिन्होंने accept कर लिया, वो अपनी teams के साथ serve करेंगे. So that will be the correct one. So managers who accept this will be busy serving their team. So the correct option will be C. Then next is, which of the following can be good solution to gain profits by making team members working without any disturbance? So इनमें से कौन सा एक अच्छा solution रहेगा कि हम profits भी gain कर लें, team members को काम करा के और कोई disturbance भी ना हो? Number 1, to maintain strict decorum and assigning day to day work. strict decorum maintain करें हम और उनको day to day work करवाएं. Then to stop recruiting new employees and giving responsibilities to the senior and experienced one. जो नए employees हैं उनको बंद कर दें हम recruit करना, और जो responsibilities हैं पुराने और senior जो experienced officers हैं उन्हें देने चालू कर दें. By giving freedom to the team members and letting them to manage their own work and let them do what they feel important for them. जो freedom है वो दे दें team members को और उनको वही काम करने दें जो उन्हें लगता है उनके लिए important है. Then assigning work to employees with respect to their field of interest. उनकी interest के हिसाब से उन्हें जो है काम दे दिया जाए. So the most appropriate option will be C, by giving freedom to the team members. क्योंकि हमने देखा था that at Decathlon, a sports equipment retailer, their form of corporate liberation is strongly supported by the CEO. Yet, since corporate liberation is a philosophy and not a model, he gives latitude to the directors of each of the Decathlon's business units to co-create their unique freedom-based organizational environment. तो अपना आप खुद का environment ऐसा create कर सकते हो जो कि freedom-based हो, unique हो. तो ये हो जाएगा कि टीम मेंबर्स को फ्रीडम दे दी जाए और उनको अपना काम खुद मैनेज करने दिया जाए और उनको वो चीज करने दी जाए जो उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डेकाथलॉन इज, तो डेकाथलॉन जो है वो क्या है? डेकाथलॉन, इट इज डेकाथलॉन, नॉट डेटाक्लॉन, इट इज डेकाथलॉन. तो डेकाथलॉन क्या है? इट इज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिटेलर. इट इज हैविंग 80,000 एम्प्लॉयज. Form of company liberation is strongly supported by their CEO. So the first line of the paragraph 3 is only this one, that at Decathlon, a sports equipment retailer with 80,000 employees, their form of corporate liberation is strongly supported by CEO. So all these three statements are correct. So answer will be D, that is all of the above. Then next is, in 2017-18, which of the following has been ranked one great place to work in France? So it is Michelin, Decathlon, Carrefour और Semisdart. So it is the Decathlon, जिसे by 2017 तक बोल दिया गया था कि ये एक बहुत ही 2017-18 दोनों में बोला गया कि it is a great place to work in France. So the answer will be Decathlon. Okay. So I hope you have understood all the questions. सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मैं होप करती हूँ. तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा. तो और आज के लिए बस इतना ही. That's all for today guys. Thanks for watching. Have a nice day.